सो फर्स्टली हम डिस्क्राइब करेंगे द वर्ड ट्रेंड मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट. व्हेन यू यूज़ दिस वर्ड एज अ टेक्निकल वर्ड को यूज़ करें टर्म फॉर द मार्केट इन अपवर्ड फेस, सो इट्स कॉल्ड एंड ट्रेंड. द कंटिन्यूस चेंज टू अ सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेंड. द रैपिड बिग चेंज इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. सही है. अब बेसिकली तौर पे बात करेंगे द हिस्ट्री के हवाले से पूरा पूरा पैरा मिल जाएगा. फिर बात करेंगे द फाइंडर के हवाले से पूरा पूरा पैरा मिल जाएगा. सो लेट्स गो स्टार्ट इट. When the strong update reaches a certain extreme level, the market turns to long, and when the strong downward reaches a certain extreme level, the turn turns back to uptrend. This repeating of the uptrend and downtrend one after one another continues forever, all through the periods for timing are always different. The concept of this market in the book around more than 250 years ago, the word 10 was not used at that time. Thou. Thou basically what makes the trend. The answer is how he wants nowadays as follows. अभी तक जो जारी है वो है in upward phase. Some investors known as noting favorable materials to some stocks and beginning to buy them. Then the market rise little. The missed material are determined through the market. सो बेसिकली तौर पे डिस्क्राइब क्या कर रहे थे हम बेसिकली तौर पे सम इन्वेस्टर इज़ नोन एज फेरेबल मटेरियल्स टू सम स्टॉक्स एंड बिगिनिंग टू बाय दैम. देन द मार्केट राइज दिस मटेरियल ट्रांसएस्टिमेटेड टू द मार्केट एंड द बायर्स इंक्रीजिंग अ डे गो बाय एंड द मार्केट राइजेस. Furthermore, after that the rise is noticed by the rest investor, the market begins to rise in a full scale. This story sounds very likely, but in 15th century, many economists, especially American, have success published their research papers. Then stock prices do not change in a regular pattern, but only in a random pattern. This research basically तौर पे encourage करती है आप लोग को. But academic business there were sitting by many economics investor and had generally accepted as fact in 20 years. सही 20 years से ये change चल रहा है the stock piece में in a random manners means that the trend nothing to do with investor physiology or fighting demand, but this does not mean that the trend does not exist. So this is not यानी बात कर लेते हैं हम द फाइंडर से हाल से, जो कि नंबर 2 हमारे पास डिस्क्राइब है. पूरा पूरा पैरा मेंशन है द फाइंडर का. उसके हवाले से डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों को समझ आएगा. बेसिकली तौर पे इफ़ यू क्रश कैच द ट्रेंड इट यूज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. यू बाय टू अप ट्रेंड and sell in downtrend. Actually, however, as market do not generally more state but more randomly move depending on the daily news and demand supply. Market moves and charted by series of zags. This zags resemble a series successive waves with fairly uplift peaks and thoughts. सही है. सो क्या क्या डिस्क्राइब करा मैंने आप लोगों से जी. तो बेसिकली तौर पे जो मैं सब लोगों को डिस्क्राइब करा है आज ट्रेड लाइंस, द हिस्ट्री और द फाइंडर्स, ये तमाम की तमाम तीनों टॉपिक डिस्क्राइब करें. साथ साथ इनकी पूरी पूरी आप लोगों को हेडिंग डिस्क्राइब करी है आज, पूरी पूरी देख सकते हैं. तो आई होप आप लोग समझोगे जो मैं सब लोगों को डिस्क्राइब करा. मैं आपसे मिलूँगी ऐसी फर्दर वीडियोस के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.